नमस्कार दोस्तों, आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। खास इसलिए भी हैं क्योंकि इनके साथ जब भी मेरा तारुफ होता है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ नया एक्साइटिंग सीखने को भी मिलता है। और आपके लिए कोई एक्साइटिंग खबर है जो कि आशीष सर हमें दे के जाते हैं। आशीष सर, ब्रांड हेड Volkswagen इंडिया। आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। और जैसे जैसे इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है ना, उसी तरीके से आशीष सर की जो मुस्कुराहट है वो भी बड़ी होती जा रही है। और अब तो वजह काफी सारी हो गई हैं सर। जब ये एडिशन आया था जी तभी शायद हमारी आखिरी बार बात हुई थी। करेक्ट। तब आपने इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बोले थे, यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। और आज जब मैं इस भारत मोबिलिटी शो से आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, आई कैन सी दैट पॉजिटिवनेस एंड द नंबर स्पीक्स वेल फॉर इट। डेफिनेटली। हाउ हैज द journey for last 3 months and these special editions done? I think Virtus sir, इसने तो मतलब आग लगाई हुई है सेडान सेगमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी गाड़ियां इसके पीछे फॉलो कर रही हैं। ये अभी भी शायद ऊपर ही ऊपर आराम से अपनी जगह बना के रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखें तो लास्ट टाइम हमने ये वर्टस का स्पेशल एडिशन और टाइगुन का भी स्पेशल एडिशन मार्च अप्रैल लास्ट ईयर में अनवेल किया था और लॉन्च सितंबर में था। सो एट दैट टाइम हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि कस्टमर्स वांट मोर फ्रॉम अ जीटी। कस्टमर्स की बहुत फेवरेट हो चुकी है द जीटी लाइन, और अब उसमें भी लोग एक्सक्लूसिविटी चाहते हैं। सो इस थॉट प्रोसेस के साथ आई थिंक वी डिड एन एक्सपेरिमेंट विद अ लॉट ऑफ बिलीफ ऑफ कोर्स कि जीटी एज कलेक्शन बनाते हैं जो कि लिमिटेड वॉल्यूम है विद ब्लैक एंड मैट एंड अ लॉट ऑफ अदर एलिमेंट्स इनसाइड. So it was a hope that we can actually take the GT badge even higher. So I'm really glad to say that with the kind of belief that we have and final product that we came out with and the kind of positioning we did with the car, it has been a huge success for us. If you remember, this car was launched exclusively online. पिछले 4 महीने में हमारे पास 2000 एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन बुकिंग्स आई है. जस्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट, उससे पहले पूरे 10 महीने में हमारे पास सिर्फ 600 ऑनलाइन बुकिंग्स आई थी. 4 महीने में फॉर जीटी एज कलेक्शन 2000 ऑनलाइन बुकिंग्स पेड फॉर बाय द कस्टमर्स ऑनलाइन. आज भी इस पे वेटिंग पीरियड अराउंड 3 months का वेटिंग पीरियड है, स्पेशली ऑन द वर्टस DSG. सो आई थिंक दिस इज द वे फॉर अ ब्रांड टू एक्चुअली ग्रो, to make use of the strengths that you have. GT badge is definitely हमारे लिए एक strength, और उसको हम किस तरह से और कस्टमर्स को एक्सपीरियंस करा सकते हैं to give more exclusivity. आज के दिन में देखिए, along with the expansion of the automobile market, customers की preferences भी काफ़ी peculiar होती जा रही है. People although they want mobility, but they want mobility which is peculiar to them, which is customizable for them, which makes them stand out in the market. So this is something which the GTH collection offered, and I'm happy that it worked. Superb. And मेरे लिए भी ये खबर ही है कि 2000 ऑनलाइन बुकिंग जो इसको मिली है, और मेरे ख्याल में ना आपने कस्टमर्स तक और पास पहुंचने के लिए नेटवर्क एक्सपेंशन में भी ना बड़ी अलग तरीके से आप चल रहे हैं, राइट? टियर 2 टियर 3 सिटीज और कस्टमर के ज्यादा पास पहुंचने की जो कोशिश है. मैं गलत नहीं तो शायद 190 कुछ टच पॉइंट्स हैं, और इस साल आपका और तेजी से बढ़ने का इरादा है. तो उस एरिया में किस तरीके से चल रहे हैं? एंड विद डिजिटल टेकिंग सो मच ऑफ लीप नाउ, हाउ इज दिस ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल एंड द ऑनलाइन मॉडल, उसका समावेश, उसको किस तरह से आप साथ में लेके चल रहे हैं? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम देखें कि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, तो जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि पिछले 10-15 साल से हम बात कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट इज पॉइज्ड फॉर ग्रोथ, इंडिया इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट मार्केट. लोगों की एस्पिरेशन बहुत है. हम एस्पिरेशनल एज इंडियंस, वी हैव ऑलवेज बीन एस्पिरेशनल. But what has changed in the last 5 years is Indians now have the means to fuel that aspiration. Right? So people can now buy out and buy an aspirational, go out and buy an aspirational product, जो कि मैं ना सिर्फ बड़ी cities में, but more importantly tier 2, tier 3 cities में देख रहा हूँ. ये aspiration है, and they have the resources to fuel that aspiration. तो I think as a brand also, अगर हमारे को अपना positioning को maintain रखते हुए we have to make customers experience more our brand, तो हमें भी वहाँ पे जाना पड़ेगा, उन लोकेशंस पे जाना पड़ेगा जहाँ पे इस तरह के एस्पिरेशनल कस्टमर्स हैं. तो यही हमारा फोकस रहा है. इन 2023 वी एक्सपैंडेड बाय ऑलमोस्ट 45 टच पॉइंट्स, केम आउट विद वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स. पिछले साल हमने 15 सिटी स्टोर बनाए. सिटी स्टोर्स आर 2-car display showrooms with all brand CI, with a very differentiated brand CI, which is more of a retail space. It may not be an exclusive car selling space or a car showroom, but more in retail spaces where customers are present right now. Yeah, so that has been an endeavor, and it has worked very well. In fact, last year, if I look at the data, although our growth was at around 8% over 2022,
a large chunk of this growth came from these new touch points as well. Yeah. So definitely our strategy of going closer to the customers and growth centers is working. सर आपने कहा कि एस्पिरेशंस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये जो एस्पिरेशनल इंडिया है, ये जो इंडिया ग्लोबल मैप पे बढ़ता जा रहा है, इंडिया स्टोरी आपको, आप मुझे भारत मोबिलिटी में वो इंडिया स्टोरी दिख रही है, इंडिया स्टोरी आपको कैसे दिख रही है? और Volkswagen के लिए इंडिया, अगर मैं ग्लोबल के लिहाज से देखूं तो कहाँ पर स्टैंड करता है? देखिए, अगर मैं बात करूं इंडिया स्टोरी की, तो इंडिया स्टोरी तो स्ट्रांग है, राइट? सो आज अगर हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, अपने ग्लोबल हेडक्वार्टर में जाते हैं, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू गो, दैट एवरीबody knows that India is now the biggest, is one of the biggest growth centers around the world. आज आप किसी भी एनालिस्ट से बात कर लें, किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लें, इट इज़ वेरी क्लियर दैट दे consider India as the nerve center of growth in the India and the shining star in the world economy. So India story to definitely is one of the topmost stories in the world. We are in the headlines everywhere, and definitely that is also playing out into our strategy as Volkswagen of how do we make use and be a part of this India story. सर, जब इंडिया स्टोरी की बात होती है, 2025 की बात होती है, तो बिना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के दीदार हमने कुछ समय पहले किए भी थे, यहाँ पर उसको मिस जरूर कर रहे हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ योर इंडिया स्टोरी, राइट? Yeah, definitely. 2025, 26 or moving ahead next 3 years, what is going to be that electric story or any other fuel that we are talking about? See, देखिए, अगर मैं बात करूँ, last couple of days I was in Germany. We had our international brand day, जहाँ पे हम सब markets actually come together at the headquarters and look at all the product portfolio upcoming in the next 4 or 5 years. So there's a big plan, and then there is a lot of I would say a product offensive coming from Volkswagen globally, and I'm very happy to say that we are part of it. Yeah, maybe a little bit premature to tell you which models, which and all. I would do that at the right time, but very happy that we are part of that growth story. Coming to electrification, I think that's definitely the story for the brand globally, and that is what I saw in the brand day and the kind of products that also were showcased. For us in India, the electrification story is in 3 parts. I think the first part is bringing some part of our global portfolio into India as a fully built unit, which if all goes well, I hope that I'll be able to showcase something to you guys very soon. And launch it also very soon this year. The second part will be local assembly of electric cars, which is also in advanced stages of discussion right now. Hopefully somewhere in 2025 we will be able to bring in local assembly of premium electric cars for us. And definitely the end point has to be mass electrification through local BEV. बजट अनाउंसमेंट हुआ जी और इंटरिम बजट था, उसमें एक चीज देखने को मिली जी, दैट इंडिया स्टोरी में कॉन्फिडेंस काफी है। How do you rate this interim budget, and what kind of a confidence has you seen with a budget that is being tabled yesterday by? I think the word itself is interim budget, so I wouldn't comment much, but I think it carries forward the momentum that we see in the economy. There's a lot of push on infrastructure, which can only be good for all sectors of the industry. The outlay for infrastructure has almost gone up to 3.5% of the GDP. And when there is so much of focus and impetus on infrastructure, we have seen historically that it benefits the entire industry and the entire country. So that's definitely something which I welcome with the push on infrastructure that we could see in the interim budget. Fantastic, sir. Just last comment on the Bharat Mobility Show. How do you find this first year of this exercise? No, I think it's a good initiative to bring the various value streams that contribute to the automobile industry together. So from that perspective, I think downstream and upstream integration of all value streams and presenting that together to customers and for all of us in the industry to be a part of is a good initiative. I think all of us can give one feedback that we'll need a little bit more time for the preparations to be there. This time the preparation lead time was definitely short. I would have loved to showcase the ID4 here, but that's how it is. So I think once now this kind of a format is in place, and if the government wants to continue it, that's something which we'll plan in advance now. Fantastic. आशीष जी बहुत शुक्रिया, और आशीष जी साथ में खड़े हैं और इनको साथ में रखते हुए मैं आपसे ये गुजारिश भी करता हूँ, अगर आपको पास कोई सवाल है जो कि Volkswagen से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ फील फ्री, कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के बता दीजिए। आपके सवालों को हम सर तक जरूर पहुंचाएंगे, और जैसे उन्होंने वादा किया कि अगले कुछ साल जो है वो ब्रांड Volkswagen के रहने वाले, कई सारी गाड़ियाँ, कई सारी खबरें जो आएंगी
राइट टाइम पे बताएंगे, लेकिन वो राइट टाइम की शुरुआत यही जागरण हाईटेक के प्लेटफॉर्म से होगी। नमस्कार। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू Thanks थैंक यू a lot. नंद।